Namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel that is the BHSO entrance exam by your coach Bakul Hansal. This is Bakul Hansal, the founder and the CEO of this startup. And today we are going to do a very small topic. I would say बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ये तो Right to Information Act 2005. देखिए Right to Information Act 2005 is a very miscellaneous topic. We'll do it today. बहुत सारे miscellaneous topics अब भी हमारे बहुत सारे चल रहे हैं. ठीक है. We've already done this cyber laws. We have already done the cyber laws is yet to come, but we've already done consumer protection. We have already done child rights. We have done POX, etc., etc. Cyber laws is yet to come, right? So various miscellaneous topics we've already covered, and static topics so सारे हो ही चुके हैं. Just a few bare acts are left, and that too we are going to do some relevant sections. Of course, we're not going to go through the entire bare act because it's a ball game there in a law school, and apart from that, just a few months before an exam, I would not recommend that as well, right? If you haven't watched इससे पहले वाली videos, though it's going to be very unrelated video to all the topics because it's a very miscellaneous and a very separate topic. ठीक है. If you haven't watched, still I've attached a few, I would say, play series. So you may go through them. I would recommend you to watch those things, those static topics as well as those miscellaneous topics. Of course, that is going to help you in your exam only. Class source is going to be class 11th NCRT in today's video. Chapter, it's page 96 of the textbook, legal studies textbook of class 11. Chapter is law reforms. Uska ek topic we're going to do. And class 12th, legal studies, class 11th, legal studies. If you're preparing for board exams, if you're just preparing for a school exams, then also these videos are very helpful. And legal reasoning section for CLAT and other law entrance exams तो है ही. Okay. Right to Information Act 2005 RTI भी बोलते हैं. Major इसका चीज is to promote transparency in the government institutions. We're just talking about transparency in government institutions. Government, remember. Okay. 2005 में it came into, I would say, induction. That was after the continuous struggle by the anti-corruption activists. ठीक है. So after a lot of struggles again, because देखो, when we basically talk about a right to information act, हम बोलते हैं कि हर, if you have heard it or not, कि कोई भी आपको डाउट हो ना, आप गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ सकते हो विद इन 30 डेज की आपके पास विंडो है. मतलब उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर को 30 डेज के विद इन इस पर्टिकुलर चीज का रिप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से यू कैन आस्क एनी इंफॉर्मेशन, चाहे आप ऑर्डिनरी सिटीजन हो कैसे हो. ये राइट दिया गया ऑर्डिनरी सिटीजन के हाथों में. ठीक है. वो गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिसर को 30 डेज में. ठीक है. नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिसर पर फाइन लगेगा. और आपको आरटीए अगेन नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग. इट लिटरली वर्क्स. जैसे कुछ आपने मांगा, सो आई रिमेम्बर आई यूज्ड इट पर्सनली. I'd asked something from the government, ठीक है, from one of the government bodies I had asked something, and मेरे को 30 डेज में रिप्लाई नहीं मिला था. तो जब आप फॉर्म भरते हो ना आरटीआई का, आप उसमें अपने बैंक डिटेल्स भराते हो, अकाउंट डिटेल्स. इसलिए ऐसे इसलिए होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिसर ने विद इन 30 डेज में आपको रिप्लाई नहीं करा, 30 डेज से ज्यादा लगे, हर दिन ना यू गेट सम अमाउंट. जैसे आई रिमेम्बर पर मतलब 100 रुपीज पर डे का चार्ज था एटलीस्ट मेरे केस में, क्योंकि मेरे को रिप्लाई नहीं मिला था 100 डेज, सॉरी 30 डेज में आरटीआई से. मेरे को से 2 महीने बाद शायद मेरे को रिप्लाई मिला था. सो मेरे को 3000 रुपीज बैंक में क्रेडिट हुए थे. ऐसे इसलिए हुआ था बिकॉज उन्होंने रिप्लाई नहीं करा था, और क्योंकि ऑफिसर फाइन होता है और आपको पैसे दिए जाते हैं. ठीक है. मतलब इट हैपेंस. सो 3000 rupees I got, and this was the RTI. I would say the right that was given to me. I'd used it particularly. Right. Talking about कि ये बहुत सारे struggles of the anti-corruption activities. So why anti-corruption activists? Again, जो corruption के against बैठे हैं. बहुत टाइम पहले की बात है. बेसिकली जो मूवमेंट था इट स्टार्टेड इन राजस्थान. वहां पर कोई मजदूर किसान शक्ति संगठन थी. So this was this organization which was, and this protest started long time back, way back in 1990. So it started where it began to demand fair wages from the government, right? बहुत सारे other concerns थे, गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज एंड ऑल, आपको जो जो फैसिलिटीज मिलती गवर्नमेंट से. तो बिगैन टू क्वेश्चन ऑल दोस थिंग्स, सर वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे थे, इसके बारे में बताओ बताओ एंड ये सब थिंग. तो वहां से फाइनली ये इट इज लाइक वेरी रेलेवेंट. तो यू नीड टू रिमेंबर 30 का यू नीड टू रिमेंबर ये जो होता है. उसके बाद फाइन होता है ऑफिसर. गवर्नमेंट बॉडी से मांग सकते हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन. अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांग लो. देखो सिंपल सी बात है, you cannot have anything in everything. देखो there are few things which are subject to limitation. For example, जैसे अब मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला, यू आर आस्किंग द गवर्नमेंट कि यार कितने किलो यूरेनियम है गवर्नमेंट के पास. यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल रिप्लाई? डू यू थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछोगे आप, कितने लोगों को बताओगे, कितने लोग अफिलिएटेड हो मान लो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर चाइना से ओरिएंटेड हो,
क्या क्या करोगे आप, मेरे को बता लो कि मैं दुश्मन देश से कोई ओरिएंटेड, फिर व्हाट विल यू डू? यू नो दिस. So that is the reason we do not ask these things, and we are not allowed to ask such things related to atomic power, related to national security, which are critical to the defense sector, which is critical to, again, the government security. So that is the reason we are not allowed to ask such things. Otherwise you may ask कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में कितने लोग अपीयर हुए थे, है ना, या फिर मान लो ये चीज क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है इधर, या फिर क्या गवर्नमेंट कर सकती थी, क्या करा. सो दीज थिंग्स यू कैन आस्क. ऑफ कोर्स जो नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले हैं, यू कैन नॉट आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आरटी. दिस आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, तो किसी पब्लिक में चलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. So we have covered this topic. Information technology will do in cyber laws. सेपरेट सीरीज है वो, नो सीरीज नहीं होगी, आई थिंक एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा वो, इतना बड़ा नहीं है. आई नॉट डील विद दिस पैराग्राफ, दिस इज वेरी स्मॉल. विल डील विद द फुल फ्लेजेड चैप्टर. दिस वाज अ थिंग व्हिच वाज येट टू बी डिस्कस्ड. So I hope, so for getting most of the details, do like, share, comment, and do subscribe to my YouTube channel.